Hi guys, welcome back to our channel Pushkkar Patke, Pushkkar with a double K. Today's second episode for our podcast, and I am having a very dear friend of mine. His name is Akshay Lokhande. Hello guys. This brother of mine has done engineering. He's been to Australia. He stayed over there. He's worked over here, and the most interesting part, he's running a business. So business, it is in hospitality, hotel management in that category, Yes. if I'm correct. So let's start. I mean, what's up, भाई? क्या चल रहा है? चल तो बहुत कुछ रहा है देखेगा तो वैसे लाइक यू नो अभी तो हम प्लानिंग टू गेट मैरिड वगैरह तो पर्सनल लाइफ वाइज भी बहुत कुछ चल रहा है एंड जो धंधा हम लोग करते हैं द बिजनेस दैट इज एन आई मीन उसमें तो कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ चल ही रहता है ऐसा स्टेबिलिटी काइंड ऑफ कि हाँ यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स स्टेबिलिटी एवरी डे तो वो भी तो चल ही रहा है सो दैट्स द थिंग बैलेंसिंग आउट माय लाइफ बस अभी पर्सनल लाइफ का भी बहुत कुछ आ गया है या ट्रू तो शादी हो रही है मतलब भाई सब लोग ही सब पैनिक सिचुएशन सब लोग ऐसे हाइपर everybody has something to add everybody has something to do and there other than that there is a lot of stuff to do as well Yes. in and around that so yes. if I mean, two हो गया अभी सब कुछ हाँ exactly if I had to ask you like if I'm coming to your restaurant right so is it a restaurant number one or is it a lounge or is it a like I would like a lot more detail about that ठीक है and also like how can I get connected with you like where is it and I want to know about that a little more अच्छा if you could because my audience does not know it I know it personally right. तो मैं क्या करता हूँ फर्स्ट आई एक्सप्लेन व्हाट इट इज पहले तो मैंने चालू किया था एक रेस्टोरेंट से व्हिच वाज इन डेक्कन okay the Three Musketeers well it is a brand in Pune right now but जो डेक्कन वाला आउटलेट था वो हमने नया स्टार्ट किया था so that is the first thing that we started and it was like a cafe and bar क्योंकि वो था भंडारकर रोड पे हाँ so over there जैसा पब्लिक है वैसा केटर करना पड़ता है तो that was a cafe and a bar we said cafe but we used to serve all kinds of food मतलब कैफे फूड तो था ही था बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी यूज्ड टू हैव अदर कुजीन्स एज वेल इंडियन भी सर्व करते थे हम लोग चाइनीज ओरिएंटल भी सर्व करते थे तो वहाँ पे ये सब भी है along with alcohol obviously that is our main business तो बार था एंड देन आफ्टर दैट जो चालू किया अभी नया उसका नाम एस्काडा है विच इज अ रूफटॉप रेस्टोरेंट दोनों में बहुत फर्क अंतर है इन द सेंस कि जो थ्री मस्कीटर्स है वो 3,500-4,000 स्क्वायर फीट का रेस्टोरेंट है छोटा वी हैव अ डिस्क ओवर देयर एज वेल फॉर पीपल हु वांट टू डांस एंड ऑल यू नो थोड़ा सा हैव फन बट दैट्स नॉट फॉर बिगर ऑडियंस वहां पे अंदर एक 25-30 लोग तक डांस कर सकते हैं ऐसा छोटा सा एक डांस फ्लोर है बेसिकली रेस्ट एसी सेक्शन प्लस डांस फ्लोर बोल सकते हैं ओके एंड उसका आउटडोर सेक्शन था जहाँ पे हम लोग लाइव म्यूजिक ऐसे सॉफ्ट म्यूजिक प्ले करते थे ऑन डेज वी यूज्ड टू हैव सम ऑफ द डेज वी हैव रॉक म्यूजिक जैज म्यूजिक तो ऐसा करके हम लोग वो शो रन करते हैं whereas एस्काडा ऑन द अदर हैंड इज अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम वो तो सीधा रूफटॉप रेस्टोरेंट हो गया 12,500 स्क्वायर फीट का है एंड इट इज अक्रॉस 2 लेवल्स एक रूफटॉप पे एक पूरा रूफटॉप है और एक सेक्शन ऊपर का भी है ओके एंड सीटिंग वाइज आल्सो इट्स बिग द गेम इज डिफरेंट अगर हम बार काउंटर ही पकड़ लो तो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट बार काउंटर्स दैट इज इन पुणे अराउंड 40 फीट का बार काउंटर है हमारा इतना बड़ा बार काउंटर है तो फिर वो गेम ही अलग है वहाँ का डिस्कोथेक भी बड़ा है और वहाँ पे दैट्स एन आउट एंड आउट यू कैन से लाइक अ पार्टी प्लेस अच्छा बट एस्काडा वी हैव थॉट अबाउट इट एंड उसको हमने ऑल डे डाइनर बनाया अच्छा मतलब दैट प्लेस टर्न्स इनटू अ पार्टी प्लेस आफ्टर यू नो आफ्टर नॉर्मल आवर्स ओके बोलो 10 के बाद वहाँ पे प्रॉपर पार्टीज होती है लाइक वी हैव टेक्नो पार्टीज एज वेल बॉलीवुड नाइट्स होते हैं पंजाबी नाइट्स होते हैं in the disco section then again we have an open to sky section भी है एक covered section भी है rooftop पे हम लोग अभी people who just want to relax office हो गया भाई मुझे आके chill करना है तो वहाँ पे ऊपर pool tables वगैरह है so people can have a couple of beers probably and play pool hang around with friends chit chat so that's a kind of place where we have all kinds of crowd I can say families भी आती है we have couples young and old couples people come there to celebrate their anniversaries come there for dates we cater them that way as well and then we have corporate parties then we have
private parties. Okay. Then there are some parties that we organize as well. Okay. So all this is happening at Escada. So, like, can you? What I understand is it's a complete package. Yeah. Altogether. And in a way, you can say. Yeah, you mentioned something about you organize a lot of parties. I did not get that. Or if you could, like, is there some special occasion that you're speaking about, or is it a regular practice at your restaurant that you have such type of parties? I if you could clarify a little अभी more. जैसे रेस्टोरेंट्स को ही चालू रखने के लिए कुछ ना कुछ तुमको क्राउड को देना पड़ता है. Yeah. एंड देन द प्लेस बिकम्स फेमस फॉर दिस. एग्जांपल ले सकते हैं जैसे हाई स्पिरिट्स या कुक आउट हो, दैट वाज नोन फॉर इट्स ब्रंच. ऐसे ऐसे हर चीज, हर प्लेस इज नोन फॉर समथिंग एल्स. Yes. सो पुणे में वी आर वन ऑफ द टेक्नो प्लेयर्स लाइक. Okay. तो हम लोग सैटरडे नाइट को टेक्नो रखते हैं. अच्छा. एंड देन वी हैव अ ग्रुप दैट इज एसोसिएटेड विद अस. Okay. Along with them, we get artists to play. Okay. And then there are people coming in, and then there are techno nights. वैसे संडे को ब्रंच रखते हैं, फिर हम लोग वेडनेसडे को कैरियोके रखते हैं. Okay. So people can come there who like having a good time. मस्त breezy चालू है, थोड़ा sunset देख रहे हैं, enjoying the wind and singing songs, getting a bit easy going, enjoying your life kind of. तो ऐसे भी देते हैं. Okay. Then we have live music on Thursdays and Fridays. Okay. ये सब भी होता है. Acha, so over what I can see is every day of the week, near about every day, there is certain activity that you're doing in order to attract more attention or more eyeballs to your restaurant or footfall. Correct, exactly. Yeah. एक वीकली कैलेंडर बनता है बेसिकली. ओके. तो वीक के ये डेज पे ये हर एक इवेंट्स बना के रखते हैं. जैसे मंडे को कॉर्पोरेट नाइट होता है, कॉर्पोरेट वाले लोगों को डिस्काउंट्स मिलते हैं मंडे ट्यूसडे. देन देयर आर एमआरपी नाइट्स where you get drinks at MRP. अच्छा. Then there is ladies night जहाँ पे लड़कियों को हम लोग free drinks offer करते हैं, complimentary drinks offer करते हैं. Okay. So we keep this game running this way. Okay, so that's something new for my audience, because see, I mean, lot of people that are listening to our podcasts have their own restaurants, have their own cafes. Probably this is something new for them, is what I feel. I just want to add one more thing, but अभी तक तो I've spoken only about drinks. लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई सिर्फ बार ही है. Okay, yeah. That's not the impression that I want to give. But our game is built around that. And definitely we've got better reviews for our food as well. I was going to. Everybody has said कि भाई खाना बहुत अच्छा है. Like I personally had thrown my एक फैमिली फंक्शन पार्टी, so people really appreciated that. And for a time I thought that लोग ऐसे ही बोल रहे हैं भाई हवा डालने के लिए अपना है तो, but then I have heard reviews which are really like genuine. Okay. भाई नहीं सही में अच्छा है. I have not had food like this, or I have not had this thing in this way. So हमने वहाँ पे स्पेशली क्यूरेट किए हुए चीजें भी हैं. And sorry I cut you in between, but no, it's completely, I mean, the stage is all yours. But see, this is something I want to know, because usually जहाँ पे ड्रिंक्स मिलता है, फूड इज नॉट वेल लुक्ड आफ्टर. yes if I you're can right. Understand, so wherever there is a drinks category in that restaurant, food is की काम चलाओ जिसको हम बोलते हैं ना, कि वैसे वाला फूड सर्व होता है. तो how you ensure that you keep such good quality? I mean, I have read the reviews. I have been कि आपका जो रिव्यूज का लिस्ट है, I have been in there, and actually people have commented good about your food. So how do you try to keep that? मैं वही तो बोल रहा हूँ अभी. एस्काडा जब हम बनाने के लिए ही सोच रहे थे, so our main focus was food. बेसिकली क्योंकि देखो हमको पता है how to play the liquor game. Okay. We know about that. उसका टेंशन नहीं था. एंड रूल नंबर 1 इज कोई भी रेस्टोरेंट खोलता है तो वो खाने के लिए ही खोलता है. यू कैन नॉट फॉरगेट योर प्रिंसिपल्स. वो चीज है. तो आई डोंट वांट टू बी नोन टू ओन अ रेस्टोरेंट व्हिच हैज बैड फूड. यार गुड ड्रिंक्स तो कहीं पे भी मिलता है. यू नो हाउ पीपल आर आफ्टर अ कपल ऑफ ड्रिंक्स, इट जस्ट डजंट मैटर व्हाट. एग्जैक्टली. पीपल आर लाइक फाइन यार. मजा आ गया. बहुत कम लोग बिरयानी के नाम पे वेज पुलाव भी मिला तो भी दे वोंट कंप्लेन. नहीं, बट मैं ड्रिंक्स को भी लेके बोल रहा हूं अभी. यार कैसे एक या दो पैक पी लो, एक या दो ड्रिंक्स पीने के बाद people don't really give a damn about the drink. There are very few people who selectively have that taste. या फिर मैं आज I want to have good drink तो लोग जाते हैं. Yeah. So that is a part which we've taken care altogether separately, but food was our main focus. Okay. तो हमने initially तो सोचा था
personally because I like sushi, मेरे को sushi रखना था. अच्छा. But that was not possible. Okay. So ये हमने जान लिया जब food trials वगैरह हम करते before the restaurant goes live. When I had the sushi, I was like, no, Akshay, you cannot give substandard food. It's better you don't give it. Exactly. Yes. तो मत ही कर. Yes. So that's what we were very picky with our food choices या फिर हम लोग जो भी देने वाले. So we were very picky. So Mediterranean हमने रखा वहाँ पे खाना, which I think was good. मुझे अच्छा लगा. I like to believe that I have a global palate because I've been to places, so I know कि what should taste what and what is substandard. ये तो मुझे at least थोड़ा सा तो एक experience आ गया है being outside. तो I really approved of the food. It was good. Okay. वही नहीं तो हमारा इंडियन गेम भी काफी स्ट्रॉन्ग है. अच्छा. सही बोले तो लाइक मंचूरियन, आई नेवर थॉट आई गेट गुड रिव्यूज फॉर मंचूरियन. मंचूरियन के पास ध्यान कौन देता है यार? यस यस. एटलीस्ट मैं तो नहीं देता हूँ. एग्जैक्टली. बट पीपल apparently have to love, I mean they like the Manchurian so much that they gave good reviews. I was like, okay, ठीक है, that's not what I expected. I wanted reviews about other things as well. Manchurian के बारे में बोल रहे ठीक है. So there has been good food reviews I'm saying. तो हम लोग ने उसके लिए काफी ध्यान रखा ही है. And जब all day diner बोलते हैं ना, तो हम लोग सिर्फ अल्कोहल पे नहीं फोकस करते. Like I'm saying, if families are coming, families usually go for good food places. Yes, yes. For them, alcohol is not the target. Yes. So in fact, that itself is a like a good indicator that if family is coming to your restaurant, obviously the food is good because not every. I mean, I'm coming to a very middle class kind of a thinking. No, but that is because because I have grown up in a family where my dad will never have a drink in front of me, but he will ensure कि जहाँ पे वो लेके जा रहे हैं वहाँ पे खाना अच्छा मिले. Because वो बच्चे या वो the ladies in the house shall have good food. That is what I was coming to. So that's a good thing. That's a good point as well. Yeah. तो बोल भी सही रहा है. मतलब ठीक है, ग्रुप में आधे लोग तो पी रहे हैं बट आधे नहीं पीने वाले लोग हैं. हाँ, exactly. Correct. जो teetotalers जिसको we say, they should have a good time. That is what I feel from your overall what you're saying right now. Okay. And if I have to ask you, if you're going on the food, तो खाना is something जो बहुत आता है. As in you have to inventory. Yeah, inventory wise. So there's a lot of raw material stuff. So something that I would like to know is कि how do you ensure that these vegetables or these meat inventories do not get expired? How do you ensure that it is used? Like, what is the criteria or what is the procedure in that particular department? Because it's a very risky thing. Yeah, it is a risky thing. I mean, risky in terms of our guest as well. And for us as well. Yes. So one thing that we have to ensure is the food that you're putting on the table for your guests, that has to be of really good quality. Yeah. We don't want somebody to put a case or file a lawsuit against us. So for that we ensure. If the food goes bad, there's nothing you can do. That's on us. Galti hamari hai. Yes. That we've either over ordered or we were not able to sell it. That's one of the things. So what we usually do is we have a group. Say हमारे पास ground staff भी है, and then we have an office team as well. Okay. So we looks after purchases, we looks after the vendors and everything. अब हमको पता है कि हमको suppose I'm just giving you an example. Suppose we need 5 kgs of chicken a day. That's what we need. Then we have an inventory as well 2 दिन के आगे का. तो वो inventory manage करता है. भाई आज 5 किलो बिका नहीं है, आज 3 ही किलो बिका है. तो अगली बार मेरे को ऑर्डर करते हैं पागल जैसा और 5 किलो नहीं करना है. तो मुझे उससे थोड़ा कम करना है. Yes. और किसी दिन और हो गए ये चीजें हमारे पास हो गए. There are all kinds of people at work. Some people just want their salaries. Who really don't give a damn. ऐसे भी होता है. हो गया like we've ordered like lots and lots of curd, lots of milk. जबकि हमारे पास milk products का इतना कुछ I mean why will I go for a lot of dairy? So when I looked at the sheet and I was like इतना dairy क्यों है भाई? क्या कर रहे हैं हम लोग? ठीक है किया तो फिर orders दिखाओ, इतने orders punch क्यों नहीं हो गए? So all of that is going waste, right? Yeah. So that's a loss for us. Okay. Even though it might be a small loss, but then that accumulates. सिर्फ दही का बोलो तो यार दही का चलो 5,000 रुपए 10,000 रुपए गया, और उसके साथ साथ पनीर भी वेस्ट हो गया, उसके साथ साथ दूध भी लेके आए वो भी वेस्ट हो गया. तो ऐसा हर एक आइटम जब ऐड करते तो द लॉस इज बिग. एंड देन व्हाट वी ट्राई टू डू, अगर हमको पता है नाउ इफ आई से प्रॉन्स इज गोना गो बैड इन द नेक्स्ट 2 days, अभी अच्छा है, हमारे पिछले 2 दिन में अच्छा सेल नहीं किया है,
Now what we can do is we can bring this item up on specials, or we have managers who upsell. That's a skill in restaurant industry. Basically जब हम पूछते हैं लोगों को कि क्या लूं मैं, क्या अच्छा है अपने तरफ, and that is when you upsell these things. Okay. तभी वो बोलेगा सर हमने आपका प्रॉन्स मलाईकरी खाया बहुत अच्छा है, आप खा के देखो सर. अच्छा, so that's the trick. Okay. चिली प्रॉन्स खाया बहुत अच्छा, आप खा के देखो. गार्लिक प्रॉन्स खाया बहुत अच्छा है. So then they'll push those items that we really want कि वो minimize करें हम हमारे losses. And inventory shift out करना है तो you have these tips and tricks to work on. और वो भी सोचते हैं भाई, ये भी सोचना पड़ता है कि ठीक है खराब होने वाले दो चीज है. धनिया खराब हो रहा है तो किसी को फर्क नहीं पड़ता है. whereas prawns खराब हो रहा है तो फर्क पड़ेगा because it's a costly item. Yeah, true. तो ऐसे ही सोच के भी prioritize. It's okay. Prioritize, but that's how the game is played basically. Upselling, which is a very good and necessary skill that I believe managers should have. Okay. Because these are the face of your business. Like हम लोग नहीं जाके बोलते लोगों को भाई, but it's our staff who does that. Yeah. So your staff is really important, and such people really help your business. Okay. Yeah. So, like while selecting somebody or while appointing somebody as a manager, so is there anything that you look for specifically? Because see, we have they are a sales kind of a category you can mention because they are selling your food. Definitely. So do you look in that aspect, or is it something like what is going in your mind while appointing someone as a manager? Very bluntly I'll say, okay. Because I don't, मतलब थोड़ा एक इसका background ऐसा कि मैं तो सोचूंगा नहीं ना कि मैं वेटर को ऑर्डर दे रहा हूँ या मैनेजर को ऑर्डर दे रहा हूँ, बट वो आपका मैसेज जो है वो डाउन द लाइन कैसे ट्रांसफर हो रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन ये सारे चैनल्स. तो ऐसे नहीं होने चाहिए मैनेजर बोल रहा है प्रॉन्स ले लो, वेटर बोल रहा है सर पनीर भी अच्छा है. नहीं ये हाँ, तो ये कैसे, हाउ डू यू इंश्योर? या ये एक होता है ना, so that such kind of, when for everybody to be in sync, we have certain standard operating procedures, SOPs जिसको बोलते हैं. Okay. One of them is briefing होता है हमेशा. तो मैनेजर ब्रीफिंग लेता है, जो भी हायर अथॉरिटी वो ब्रीफिंग लेता है, वो स्टाफ को समझाता है भाई आज का टारगेट क्या है, हाउ वी आर गोइंग टू रन द शो फॉर टुडे. इट्स लाइक अ थिएटर. एवरी डे इज लाइक अ थिएटर इन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री. कि बिठाओ बोलो भाई आज अपना ये सब चीजें हैं, दीस आर ऑल द थिंग्स दैट वी नीड टू डू, दिस इज हाउ वी गोइंग टू डू. प्रॉन्स खत्म हो रहे हैं, टुडे वी फोकस ऑन प्रॉन्स. ओके, राइट. सो ऐसे करके देयर इज अ ब्रीफिंग दैट द मैनेजर टेक्स. लाइक यू आस्क्ड रिक्रूटिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैसे सोचते हैं. मैनेजर के लिए utmost important is his experience, the way he conducts himself, and then his on job skills देखते हैं हम लोग कैसे. So these all things are very important. अभी there are some people who fake, like हमारे पास एक बहुत सही मैनेजर रहता है, बात करने के लिए सही, सब कुछ सही, और CV भी अच्छा, but performance zero. He had his own personal life issues as well. That seeped into the work. But yeah, I mean ये सब चीजें important है. हम लोग फिर क्या करते हैं, we sometimes keep people on a trial basis. आपको 2 दिन का 3 दिन का ट्रायल रहेगा, and after that you'll be made permanent. ऐसा करते हैं. So we see how he's performing those 3 days, 4 days, whatever, and then we hire. But touch wood, we've got really good staff, and basically there is somebody who looks after staffing as well. तो हमारा ये headache नहीं है कि so that job is done by somebody else. But वो screening process जो है, for that yes definitely we have to look into it. Okay. कि भाई हम लोग ये लेने को सोच रहे हैं, ठीक है, तो फिर बताओ भाई इसके बारे में क्या है. Okay, that's great. If you could just tell me कि if your hotel is earning 100 rupees, so in that 100 rupees, this is something I ask to a lot of people. तो 100 रुपए में how would you distribute? खाने में इतना गया, like is there any kind of such distribution कि ड्रिंक्स में आज इतना गया या खाने में इतना गया, ऐसे कुछ रहता है, ऐसे कुछ आप करते हो, या probably ये सेक्टर को ये लगता भी नहीं होगा. I don't know. Like you're talking about the food margins. I'm not saying about, no, I'm not saying about the margins. I'm saying कि see, every day I have a sales target to achieve. Right. तो in that sales target I know कि if 100 rupees मेरा दिन का टारगेट था तो 60 rupees मुझको ये प्रोडक्ट ने दिया, 10 rupees एक तीसरे प्रोडक्ट ने दिया. तो ऐसे कुछ रहता है. डू यू हैव एनीथिंग लाइक अ डेली सेल्स? यूजुअली मैं बोलता हूँ कैसा होता है, अगर 100 रुपए मैंने कमाया तो मेरा 40 रुपीज मेरे खाने से आता है और 60 रुपीज मेरा दारू से आता है.
Okay. So drinks, alcohol is something that gives you high margins. Okay. Because alcohol का कैसा है, see, the price at which you buy, whereas our landing cost, मतलब the price at which we buy, there's a lot of difference. Like if I tell you how much, तो तू कभी जाके पिएगा नहीं, तो मैं बोलूँगा ही नहीं. True. ठीक है. Exactly. So yes. there is a lot of difference in that. So that's why the margin is also high. And then there are some restaurants, they sell alcohol at crazy rates. मतलब हम कभी-कभी मैं ही बोलता हूँ यार, कुछ तो सीक्रेट बताओ कि क्या है समथिंग जो हमको ये नेक्स्ट टाइम अगर मैं किसी लाउंज में जाऊँ तो आई नो कि भाई यहाँ पे तो ये मेरा काट रहा है, समथिंग लाइक दैट. ऐसे कुछ रहता है. डोंट गिव मी द डेप्थ या डिटेल. नहीं, काटने की बात नहीं है. हाँ. It is just about accepting what it is. अभी यार मैं बियर को I can keep it 100 rupees a mug. हाँ, obviously. I can keep it 500 rupees a mug. Okay. And I can keep 50 rupees a mug and I can still earn money. अच्छा, 50 rupees maybe you'll earn money. That is what I'm trying to say. Okay. So it all depends. अभी देख कैसा है यार, लोगों को सिर्फ दारू नहीं, some people go for experiences. Yeah. फर्क भाई, अभी कैसे बोलो, अभी अपन आविष्कार में बैठ के भी पी सकते हैं ना, और अपन तो बोल रहे तो अपन 2 BHK में जाके भी पी सकते हैं. 2 BHK में क्यों इतना महंगा? It's about the experience. That's it. Yes. चीज तो सेम ही है. True. बस वो क्यों जेब है अभी, बहुत डीप पॉकेट हो गया, जाऊंगा मैं, क्यों नहीं? I couldn't do that. I will do that now. Okay. It's about that. Yeah. Have you I'll come to the little bit of a personal side. Professional we've discussed थोड़ा बहुत. What I want to know is कि देखो यार, hotel is something ना, या restaurant as a business is something जो as far I understand is थोड़ा pressure वाला काम है कि यार ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो इसको करो, उसको करो, भाग दौड़ kind of thing. तो इससे कुछ तेरे पर्सनल लाइफ पे या आपके पर्सनल लाइफ पे कुछ इफेक्ट कैसे होता है? लाइक हाउ डू यू मैनेज दिस स्ट्रेस विथ योर फैमिली लाइफ? आई मीन फैमिली लाइफ, obviously you're not married as of now, but I'm asking in a general perspective. दोस्त हो गए, your parents हो गए, anything in that perspective, how do you think it affects and how do you bring yourself out of that frame? Because see, I am an employee for a X organization. 6 बज गया तो I'll lock the doors, I'll shut down the laptop, I'll come out. But being an owner, you cannot do that, right? So how do you manage that? What are your working hours? How do you... I'm just like, there are no working hours, to be honest. ये बोल रहा हूँ मैं. Like, if you've completed your question, then I can go. Yeah. If there's anything you want to add to it? नहीं. I just want to know about your working hours. I want to know how you manage your stress, if there is any. That's what the basic concept I want. If there is any का तो question is rhetorical. Okay. मतलब वो पूछने की जरूरत नहीं है. वो है. And it is tremendous amount of pressure. Okay. ठीक है. अभी जब यार, एक तो पहले चीज मैं मेरे पर्सनल को भी लेके तुझे कुछ बताऊंगा. रेस्टोरेंट इज डेली ड्रामा. ओके. और धंधा कर रहा है ना, मतलब एक होता है, एक बहुत ही गलत एग्जांपल, सेक्सिस्ट एग्जांपल दूंगा मैं, बट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, एक होता है एक शांत बीवी. ठीक है, धंधे भी ऐसे होते हैं, शांत, स्टेबल. और एक होता है बहुत चंचल, बहुत डिमांडिंग बीवी. तो ये रेस्टोरेंट डिमांडिंग भी है. हमेशा खुश रखो इसको. ओके. टू कंटिन्यूअसली केटर. अच्छा, इस टाइप का सीन है बेसिकली. सो आई डोंट नो इफ इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल it's fine, ऑडियंस और व्हाटएवर, बट not a problem. आई होप दैट हेल्प्स टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव. मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि इट्स अ बिजनेस दैट्स वेरी डिमांडिंग. या एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इट टू बी स्टेबल. तेरे को लगता है मस्त, ये पिछला महीना मैंने मस्त कमाया, अगला महीना तो मैं सेट हूँ. कुछ सेट नहीं है भाई तू. ओके. It's not like that. There are so many things that come up. There are so many regulations. There's so many stuff. There's stuff with the staff. नहीं सर मेरे को छुट्टी चाहिए, नहीं मेरे को ये करना है, नहीं ये नहीं मिला, नहीं ये खत्म, ये दारू खत्म हो गई, वो आ नहीं रही है, वो आएगी 4 दिन बाद, तो फिर कस्टमर भी बोलेंगे. There's so many. एक तो एक प्रोडक्ट नहीं बेचता ना. There's so many products in the whole inventory that you need to look after. There's staff. Then there's the whole place. Then there are issues with the landlord. Then there are issues with the government. There's all. कभी रूफटॉप रेस्टोरेंट्स टारगेट हो जाते हैं भाई. तो उसको भी you have to tackle. कभी न्यूज़पेपर में आ जाता है कुछ, पता नहीं भाई. तो just everything going on. सो रहा है भाई, अचानक मैसेज देखता है, यार क्या है यार. And it really took a toll on me, like a heavy toll on me. Like तेरे को ये भी पता है कि यार this is not the only thing that I do. I'm also working. Yeah. तो working as in
I get it. हाँ. Professionally Yeah. working in other industry, job. तो भाई वो उसका तो वर्किंग आवर्स तो मेरे को करने ही है, वहां से तो मैं भाग नहीं सकता. Yeah. तो वो छोड़ के उसके बीच में भी रेस्टोरेंट्स मैनेज करो either, and after that once that gets over I used to finish my work at 9:30. Okay. अभी तो फिलहाल कुछ ठीक है मतलब. हाँ. That time I used to finish at 9:30 earlier. उसके बाद क्या तैयार होके चलो जाओ रेस्टोरेंट, आ जाओ घर पे 2-3 बजे. There is no personal life if you want to say. Either get your personal life there or manage it there or manage everything together. ऐसा है. तो ऐसा you cannot have pockets. Initially तो I could not have. Either I'm bad at management or I don't know what, but initially I just could not. और ना मेरे पास वो लिबर्टी थी कि इस चीज को नहीं बोल सकता, उस चीज I had to do everything together. करना ही था तो करना ही था. जब हम लोग सब उस रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे थे तो सब चीज को मैनेज करना, जाके देखना, I had to be there. So I had to be there. वो मीटिंग्स that I had to do, I had to do them. I couldn't help it. Yeah. तो वो टाइम पे पर्सनल लाइफ बहुत टोल लेने लगी. And then my dad also didn't very much like it. I mean, he never thought that I'm going to sign up for anything like that. So your dad was against the idea of... No, he was not against, but then he was like, what are you doing, Akshay? तो तेरे पर्सनल लाइफ को मतलब is this the life that you want? कभी कभी तो चिल्लाए भी, खुद को क्या सेलिब्रिटी समझते हैं, घर पे 2-3 बजे आ रहा है. अब मैं क्या समझाऊं उनको कि I'm like, okay, fine. It is what I need to do. तो initial struggling days you can say, ऐसा कुछ time. हाँ, तो अभी now he's gotten used to it कि नहीं, he's understood the मतलब कि है तो है भाई, क्या कर सकता है. So then there was times when I used to come at home at 2:30, 3, 4, 4:30. some एक बार तो सुबह 8 बजे घर पे आए हो. Oh. तो ऐसा भी हो गया है. You're saying कि सुबह ऑफिस किया, शाम को होटल किया, I mean yes, your restaurant, and you've come 8 a.m. in the morning after doing all this stuff. Yes. At 8 a.m. because वो सब बंद करने के, वो सब करने के बाद there were some issues with the managers. तो उसके साथ बैठ के बात करके समझा के and everything, all that whole those negotiation and all those talks and that all process took so much of the time कि मेरे को समझे नहीं कब 7:30 बज गए यार, अब मेरे को घर जाना चाहिए. तो ऐसे भी हो गया. So and all of this has taken toll. I mean in terms with Aishwarya as well. तो भी I mean I'm very thankful that she's very understanding in that sense कि कभी उसने खुद को ऐसा ये नहीं किया कि तू मुझे टाइम नहीं दे रहा, क्या कर रहा है. She always understood all of that. But definitely यार मेरे को भी लगता है यार that this I should have done or I should have given time, या मैंने टाइम देना चाहिए. तो वो कभी कभी वो नहीं होता है. वो तो छोड़ो, अभी दोस्तों के साथ भी अभी सब लोग गाली डालते हैं कि यार तेरे से कुछ टाइम पे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते. ये भी हो जाता है. एनीवेज आई एम बदनाम फॉर दैट. दिस हैज जस्ट मेड मी वर्स. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं. नहीं, बट सी, इफ यू वांट टू सक्सीड you have to take और मैं उस टर्म्स में I am not very good at that as well. मतलब मुझे वो खुद से फोन उठा के चला के, अभी मैं फ्री बैठा हूँ तो खुद चला के भाई क्या हो रहा है, क्या चल रहा है. I am not very good at that. Well, definitely तू तो जानता ही है भाई, मेरे घर पे बचपन से अपन सब लोग चिल करते हैं, दोस्त है. बट मेरे को अभी वो खुद से चला के फोन करके बुलाने का या फिर बात करने का होता नहीं. बट डेफिनेटली इट डजंट मीन दैट any of thing is lost. But just कि मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा वक्त मेरे को मिल लिए. हाँ, you're caught up with so much of hustle in your life कि you need that me time. एक वो टाइम है भाई, 5 मिनट रहने दो, मुझे अकेला रहने दो. That type of thing. You used a very nice word, hustle. हाँ, बट मेरे को लगता है इंडिया में लोग हसल नहीं स्ट्रगल करते हैं. स्ट्रगल ही बोलूंगा, हसल नहीं बोलूंगा मैं. नहीं यार, you are doing a hustle. I feel, because personally I don't know how many people do such kind of thing. I mean there is a certain number जो करता होगा, but in my close connection I have never seen someone जो इतना कर रहा है. And it's something that is appreciable. I mean सच्ची में भाई इतना कौन करता है. इतना करने का मेरे को पता नहीं if it's a lot or not, but it is something that I need to do. मैं उसको वैसे ही देख रहा हूँ, करना है तो करना है. And the reason for all doing so much is because there is, I mean in India you cannot just rely on one revenue stream. I believe you need to have multiple revenue streams. And I look back on my life because I spent some time abroad. Education करो, वहाँ पे थोड़ा job करो. Then I came back over here because I had to, because of personal reasons I had to come back. Then I thought I lost a lot of years in that. Okay. जो stability मेरे को ये उम्र में होनी चाहिए थी मेरे पास है नहीं अभी. तो that is the reason why I took these struggles and I was like fine, neither did I know कि मैं इतना बजने वाला हूँ.
मेरे को नहीं पता था कि मेरे को जिंदगी पूरा मतलब दौड़ाएगी, बट हो रहा है. इन द प्रोसेस आई एट टाइम्स फील आई एम बर्निंग माई सेल्फ आउट एज, बट अभी कर सकता है, can't do that later on. Exactly, I was going to Yeah. come कि boss, बाद there में is तो a certain set time जिसके Yeah. अंदर you can do all this. उसके बाद तो you can sit and chill and relax with all what you've done in the past. But Yeah, कर सकता हूँ धंधा ना, मजा मेरे को अभी आएगा, yeah, तब नहीं आएगा. तभी मेरे को शायद आज जो मैं प्रेशर ले पा रहा हूँ मैं वो ले भी नहीं पाऊंगा तभी. yeah, true, true. So, it is funny ना, इंजीनियरिंग जिसने किया है उसको तो कंप्लीट रिलेट हो जाएगा कि क्या कैसा टाइप का है भाई. Yeah. If you लगती है allow पर मजा भी आता है. if you allow me to call you भाई on TV right now, Yes, man. but भाई एक चीज पूछना था कि what is the toughest time, what is the baddest day, if you would like to share with us, That I've had. that you've had in this particular business. क्योंकि देख, see, everything cannot be so goody goody. गुड़ी गुड़ी तो नहीं होता भाई. हाँ, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ कि क्या रहेगा कि तेरे हिसाब से ये भाई, ये अगर दिन में वापस इसको रिवाइंड करके वो एक गलती ठीक कर देता ना, तो आज ये दिन मेरे को यहाँ पे चुपता नहीं. मेरा है एक पर्सनल. बिजनेस को लेके बोल रहे हैं? हाँ, बिजनेस. नहीं, आई एम talking right now about business. If you want, we can have the next can be one in the personal also. बिजनेस को लेके if I had to rewind, I really think there are two things that I should have really acted well on. मेरे को ऐसा लगता है. One is with the first restaurant that was there, we really needed a good manager. Okay. जो था वो सही में अच्छा था, but he became too comfortable with his job. I should have been a bit too cautious कि भाई I should have taken some steps earlier, तो ताकि I would have probably minimized my loss over there. Okay. Okay. And second is again with the same restaurant only. Okay. अभी सीन ऐसा हो गया कि PMC ने आके वो तोड़ा है. The earlier one. Okay. हाँ. I think we should have handled that a bit proactively. Because I don't know हल्के में क्यों लिया या फिर like ठीक है. We have the backing of the landlord. बोल रहा है भाई यहाँ पे कुछ सीन नहीं है. Maybe they just issued a warning. We took it a bit lightly, and what we know is 6 days later they come down and they bulldoze off everything, flat to the ground. That was a big setback that we had, and then that circulated on social media. सब जगह पे people are sending me those reels, those photos, and then they're asking me like this is not the headache that I wanted. True. Already I'm चल ही रहा है जिंदगी में बहुत कुछ, तो ये नहीं चाहिए था, और ऊपर से ये जब हो गया है इट्स अ लॉस. Yeah, obviously. एंड काफी बड़ा लॉस था. I mean, if I compare to hippie को भी लॉस हुआ था, but then I don't want to take such kind of losses. True. Which is due to my or our negligence. So that's one thing that I would like to go back, rewind and work on that. Probably if given a chance, तो कुछ ना कुछ तो करता. Something that I feel I could have done maybe. So how did you like? It's a big loss. Yeah, it is a big. It was a really big loss. What we've done now, हमारे पास कुछ है नहीं करने के लिए. What's done is done. We are trying to minimize further losses from it. Yeah, because I can do some recovery at least. I can imagine कि अगर Instagram या Facebook, whatever social media पे एक बार वो चीज आता है, तो you have to regain your image. You have to rebuild your image. You cannot मतलब एक constructional अगर कुछ damage हुआ है तो काम भी करना difficult होता होगा ना. I mean पूरा ही knock off किया, मतलब the footfall might have reduced. तो वो सब चीजें, हाँ, तो ये सब you cannot exactly. तो कबाड़ी में कौन खाना खिलाएगा, मतलब ठीक है गार्डन सेक्शन गया ना, अंदर भी तो लोग आएंगे तो उनको दिख ही रहे ना भाई ये क्या कबाड़ है इधर, और नहीं बंद ना, तो that was बंद. That was I mean personally very difficult thing. हाँ, तो अभी मतलब दुश्मन पे भी नहीं आना चाहिए टाइप्स. बिकॉज रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जब लॉस होता है ना पुष्कर, फट जाते हैं. गोस डाउन साउथ. डाउन साउथ मतलब इट्स अ लॉस दैट यू डोंट वांट टू सी. ओके. बिकॉज उसका ऑपरेशन कॉस्ट इतना है, जिसको ऐसा मतलब रेस्टोरेंट बिजनेस दिखता बहुत मस्त है, फ्लैम्बॉयंट, फ्लैशी, यस, लुक्स वेरी लुक्रेटिव, बट द डे यू सी द लॉस, योर रियलिटी इज स्लैप्ड इन योर फेस. ओके. इतना बुरा होता है. और तू एक महीना देख, ठीक है,
जब तू 3-3, 4-4 महीने, 5-5 महीने देखता है ना, तब तब तेरे को रात को नींद नहीं आएगी, तेरे दिमाग में वही वही चीजें चलते रहता है कि भाई, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ मनी दैट इज इन व्हाट। या अभी आई विल से, आई गिव यू अ फिगर टू बी ऑनेस्ट, अगर 1 महीना में वो रेस्टोरेंट बंद रखता हूँ तो मेरे को upwards of 14-15 lakh upwards plus. That is the amount I need to keep investing in the business a month. 14-15 upwards is basically bare minimum 14-15 लाख तो डालना ही डालना है। 15 लाख के ऊपर डालना ही डालना है। हाँ भाई, दैट्स द बेस। 15 लाख से आगे ही जाना है, मतलब 15-16 में भी। मैं क्यों बोल रहा हूँ, ताकि मैंने फूड परचेस नहीं किया, सेल्स नहीं किया, कुछ नहीं, तो बेयर मिनिमम टू स्टे अफ्लोट बोल रहा हूँ। हाँ, मुझे उतना तो करना पड़ेगा। I mean, I'll have salaries to give. I have the rent to pay. Then I have the electricity bill to pay. Then I have to maintain. I have to keep my fridges on. Yeah. I have to keep the food. Yes. So, है cost involved है. अगर losses, मतलब if you want to make profits. Yeah. If you want to make even a rupee of profit, तो वो you'll have to see कि तो कम से कम उतना कमा रहा है. कम से कम उतना, उसके काफी ऊपर ही है. वैसा है. But then that becomes very difficult to pay off. Okay. भाई, तो मैं 1 महीना बोल रहा हूँ ना, अगर पकड़ ले तू, हर महीने तू लॉस देख रहा है, हर महीने का तू लॉस देख रहा है, और तू 6 महीने भी कर, तू 5 या तू 6 महीने लॉस देख, कितना होता है? एग्जैक्टली, दैट्स अ ह्यूज फिगर। बहुत क्या, और 6 महीने में कहाँ से तुम खड़े करोगे? पुणे में तो एक 1 BHK फ्लैट आ जाएगा भाई, इतना तू बोल रहा है। आई मीन दैट्स व्हाट आई कैन इमेजिन। पसीने छूट जाते हैं भाई। यू आर लाइक, क्या किया मैंने, क्यों घुसा ही क्यों उसमें मैं? या so that is the time जब you question your own you question a lot of things. You question your ability, you question, it comes on your confidence, it comes on everything, your luck, सब चीज पे आता है। True. सब चीज पे आता है। एक पूछना था कि when you have such situations, तो फिर how do you stand up from there? कि भाई अभी ठीक है, हुआ वो हुआ, do you replan, कैसे करना है, रीस्ट्रक्चर करते हो क्या, मतलब यू, आई मीन पर्सनली एक तो ऑप्शन है बंद कर दूं, ये ऑप्शन है कि आई फाइट अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, आई सिट डाउन। तो व्हाट इज योर प्रोसेस? बिकॉज 5-6 महीने आई कैन नॉट बेयर अ लॉस, राइट? एज अ बिजनेस ओनर यू विल हैव टू एक्ट ऑन दैट। तो इज देयर समथिंग दैट इज देयर, और डू यू वेट फॉर कि सीजन आएगा या ये सीजन खत्म होगा तो वो ऑटोमेटिकली इट विल कम बैक? ऐसा कुछ क्वार्टरली साइकिल्स रहेगा कि Q1 में तो लॉस ही होता है, Q3 Q4 लाइक यू आर सेइंग, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज़ इंडियन मार्केट तेरे को पता है भाई, सीजन्स, फेस्टिवल्स पे बहुत डिपेंड करता है। बारिश होती है तो नोबडी वांट्स टू गो आउट। अभी स्विगी जोमेटो आया तो पीपल विल ऑर्डर फ्रॉम देयर, दे विल बारली गो। अगर ऐसा भी होता है किसी दिन बहुत तेज बारिश हुई तो हमारा सैटरडे का सेल ठप है, हमारा टारगेट नहीं। एंड दैट इज योर Saturday night is the for a lounge is the best day of the week. Yeah. तो वो होता है, जैसे अभी नवरात्रि है, 9 दिन भाई गणपति आए, 10 दिन तुम्हारा रेस्टोरेंट, और ये सब क्या होता है, ये सब बैक टू बैक चलता है। Yeah. So वो टाइम पे people don't eat non-veg, people will not drink, people will not go out. Yeah. तो ये फुटफॉल कम होता है। It definitely is shown on the business, reflect हो ही जाता है वो। But then there are high months as well. अच्छा, where you make double profit. ऐसा भी होता है। That is where you need to capitalize. That is where you need to make up for the losses. That is where you want to, maximize your profit. तो ऐसा होता है। And like you said, लॉस होता है तो तुम लोग क्या करते? एक तो ये इंडस्ट्री ऐसा है कि people don't want to see quick changes. That brings a big question on the credibility of the brand. Okay, yeah. Change कर दिया, क्यों? शायद चलता नहीं होगा। हाँ, true, ये भी होता है। You have to show consistency as well. Yeah. तो you have to have, हाँ भाई मेरी लगी पड़ी है, but I have to maintain a poker face. I have to maintain a happy face. Yeah. वो भी होता है, लगी पड़ी मेरे को पता है, but मैं वो सामने वाले को तो नहीं दिखा सकता हूँ, और I cannot do anything which is not as per the standards that are set. Yes. तो you plan yourself out कि भाई मेरा stop loss क्या है, कब तक मिलूंगा, तब तक इतना है ना, तो ठीक है, I'll try to मेरे पास, I'll obviously evaluate myself, मैं देखूंगा, और फिर ठीक है भाई इस तक मैं होल्ड कर पाऊंगा, इसके बाद मैं, और उतना तो यू हैव टू बी टेक इनटू कंसीडरेशन। तो अब लोग वो करते हैं,
वी प्लान आवरसेल्व्स आउट, हम लोग सोचते हैं हाँ गया, हम लोग ने ऐसा भी होता है हम लोग ने कुछ तो नया प्लान इम्प्लीमेंट किया ये सोच के कि भाई अब तो कमाएंगे, नहीं हो गया तो लगी तुरंत वो प्लान चेंज नहीं करते, यू हैव टू ट्रस्ट, यू हैव टू गिव इट टाइम टू ग्रो ऑन इट। ये महीने नहीं चला, अगले महीने भी नहीं चला ये प्लान नया प्लान, बट तीसरे महीने में चलना शुरू हो गया, ट्रेंड देख लिया, या फिर ऐसा होता है चौथे महीने में भाई हिट हो गया, ऐसा भी होता है। ओके अभी एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम लोग को संडे ब्रंचेस करने थे एस्काडा पे, परफेक्ट लोकेशन पुष्कर, बहुत सही, मैं देखा ना मस्त है यार, वी हैव गॉट दोस गुड आर्चेस बड़े बड़े ऐसे, वहां से सनसेट दिख रहा है, गुड स्काईज, यू नो ऑरेंज पर्पलिश पिंकिश कलर्स इन द स्काईज, थोड़ा सा यू नो हाउस म्यूजिक काइंड ऑफ लग रहा है, मैं ड्रिंक थ्रू, इट्स ब्रीजी, विंड इन द एयर, इट्स ऑल गुड, see beautiful people around enjoying happy faces, good vibe. I thought this is going to go good. Sorry, I didn't mean to say brunch, मैं sundown की बात कर रहा हूँ। Okay, sorry. I said हम तो लोग brunch followed by sundown होता है, तो मेरे को लगा भाई सही हो जाएगा, but for some odd reason that didn't pick up. It didn't pick up. We pushed it for like weeks. We did a good 12-week run, 13-week run, but it didn't pick up as the way you wanted it to. जैसे ब्रांचेस का भी चालू किया, we got influencers, we made good food, delicious looking, Instagrammable, everything. It took some time to grow. Yeah. कभी-कभी ये भी होता है यार, some places are meant to have such kind of things. Some are not. Okay. तो शायद probably that place, that crowd didn't want, maybe everybody is running to Koregaon Park for that. Nobody is going to really come to Kalyani Nagar. Okay, yeah. ऐसे भी हो सकता है. Yes. So that is something we learn है भाई, ठीक है, ये शायद गलत गया. It's okay. And then we plan out the losses. कितना जाएगा? 12 ब्रांचेस का, 13 ब्रांचेस का कोई नहीं गया तो भी कितना जाएगा? Are we capable enough to hold it? तो हम लोग ये सोच के करते हैं. Okay. That's what we at least hope. So that's something like it's a learning ना. और ये बहुत ही अलग गेम है भाई. मतलब कभी-कभी ऐसा लगता है ना, वेज रेस्टोरेंट खोलना चाहिए था. Genuinely, I mean, for a change, something I feel which I have not seen in Pune is a pure veg bar. I don't know. I mean, let's not take names, but if there is any, might be. But I have one in BKC, which I've seen where all the Gujaratis go. Really good. Okay. So that is something which you can look as an, expansion. No, but that's a. I mean, उनका concept पसंद नहीं है, but हो सकता है. एक पब्लिक है वैसा. मैं क्यों बोल रहा हूँ प्योर वेज रेस्टोरेंट, नॉट बार. प्योर वेज रेस्टोरेंट. Okay, why? Is because it doesn't have any of the nuisances or any of these issues. Okay. That we face. So they do have their sets of issues, but headaches कम है. Okay. लोग आते हैं 10-11 तक, रेस्टोरेंट बंद, सब तुम घर पे. You don't have to stay in late hours. ना पुलिस का लफड़ा, ना किसी का fights, no nothing. Everything's going good. Yeah, true. तो उस हिसाब से I was just joking about it, but yeah, I mean, I also understand that. What I think is कि your business is like higher the risk, higher the rewards kind of a thing. Yes, you can take the call, not नहीं. Busy man. नहीं रे बाबा. Definitely देखना. अरे गप रे बाबा, ऐसा कहीं नहीं. फक्त चेक करतो है. नहीं चलेगा. This I mean, we are done with our time actually. अच्छा. हाँ. It's so what I would like is कि let's sit down, let's have a discussion about the segment that we all do is SWOT analysis. So strengths of your business is something is that एक सेकंड ना, मेरे को बस पूछने का कि अपना टाइम कब तक है, लाइक इज इट अ 1 hour शो? या इट्स मोर देन लाइक 40 odd minutes, तो ठीक है. आई होप वी आर वेल पास्ट ओवर 40. तो तेरे को शायद पता नहीं कंटेंट मिला कि नहीं, बिकॉज़ पीपल माइट थिंक यार भाई बहुत नेगेटिव ही बोल. नहीं बोला नहीं जाता. सी नहीं पीपल माइट गेट डिसहार्टेंड who they are willing to probably. नहीं डोंट थिंक लाइक दैट. व्हाट आई फील इज व्हाट यू told us today is something that people shall actually listen to, because what happens is they get rosy picture. मैं personally speaking, मेरा कॉलेज में एक सपना था कि यार ऐसे ही कुछ होटल खोलूं, ऐसे ही कुछ करूं एंड बहुत सारा पैसा कमाऊं. बट अर्निंग फ्रॉम अ होटल इज समथिंग, क्योंकि आई हैव सीन जो मेरे आजू बाजू में कैफेस खुलते थे, फॉर एग्जाम्पल देयर वर ट्रेंड अपने कॉलेज में,
कैफेज के बाद कैफेज खुल रहे एंड विद इन 6 months, विद इन 8 months दे शट डाउन. वहां पे एक तो नया कुछ तो आता है या दे शट डाउन. वेरी फ्यू पीपल हैव सस्टेन्ड दैट बिजनेस. तो दैट इज व्हाई व्हाट यू एक्चुअली टोल्ड अस टुडे समथिंग जो लॉन्ग टर्म के लिए काम है कि भाई दिखता है पैसा है बट ये पैसे कमाने के लिए भी बहुत मेहनत है. मेहनत तो बहुत एंड रिस्क है. रिस्क, मेहनत, efforts, I mean, in the right direction, not just being optimistic but Yeah. being realistic about your business. Exactly. पैसा है भाई, जब पैसा आता है ना तो मजा भी आता है. And this business has got a lot of things associated. It's going to, if you're talking about restaurants in terms of having a bar and all such kind of a lounge or a club or a pub, if in this segment are you talking, it's got its own things attached to it which are going to definitely affect your life. Yeah. So it's very difficult business to do. Businessmen in the community ऐसा बोलते भी है कि भाई किसी को बर्बाद होना है तो हम लोग उसको होटल खोल का एडवाइस देते हैं. This is a saying that really goes around. It's because it is a very tough business. जितना दिखता lucrative है उतना ही difficult है to run. Okay. मतलब लोगों को क्या लगता है मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा बड़ा डाला है भाई बहुत. Definitely वो भी तो है, but in this restaurant it's a very unpredictable kind of a business. Okay. The highs are highs, like really good, Yeah. and the lows are super lows. Okay. So you have to get yourself in between that, try to minimize the lows and make a balancing out kind of a situation. Yes. अभी जब मैं I spoke about losses, but if you're earning तो उस पे के ऊपर कैप नहीं है पुष्कर. Okay. Honestly speaking, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा 4 लाख महीने का लॉस हो गया, but then what is the highest number that चल ना 4 लाख is the loss, but एक कोई महीने का ऐसा बोल कि प्रॉफिट जो मतलब you want to say कि बॉस ये महीने में या ये टाइम पे सबसे बेस्ट ये था, ऐसा कभी मतलब is there anything like that? I'm just asking. है अभी and you can like completely मैं एक बात बोलता हूँ कि like, जब एस्काडा खोला है ना, पहले चीज तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं एक वो छोड़ भाई मैं रेस्टोरेंट खोलूंगा, यही नहीं सोचा था मैंने came back from Australia. I wanted to take a break of 3-4 months. मैंने ले लिया. Then I took up a job, and while taking up a job, I was in the process of this restaurant whole thing. And fortunately, it just happened to be कि I was lucky कि हमारे घर में ही already मेरे घर में मतलब मेरे घर में ऐसे when I'm living with my parents and my immediate family, तो यहाँ पे कोई business वाले लोग नहीं है. Everyone's like भाई नौकरी कर. And 9-to-5 mentality. And security. 4 पैसे कमे वाले तेरे साले पण 4 पैसे तो 4 पैसे येत राहतील. Yes. So वो risk taking appetite नहीं था. But I really wanted to break out and of this whole chain and probably start something. And the reason for restaurant cannot be my number one source of income. That's always going to be my side income. Okay. Because उसमें stability नहीं है. किसी का हो सकता है number one, but for me it's not. Because I see it something, and because I have my personal dreams. I don't want to be ऐसा कि मेरे पास रेस्टोरेंट है बस खत्म. मेरे को जिंदगी में कुछ अचीव भी करना है. Yes. Something I'm looking up कि I probably will be able to do these things. तो उसीलिए मुझे रेस्टोरेंट्स को नंबर वन सोर्स ऑफ इनकम नहीं रखना. बट इट्स रियली गुड सोर्स ऑफ इनकम टू हैव एज साइड इनकम है. और मैं जैसे बोल रहा था, आई नेवर हैपन टू ओपन अ रेस्टोरेंट. मैंने सोचा नहीं था. सोचा था मतलब 40 का होऊंगा तब सोचा था यार. I mean not when I'm going to be 30. I really thought I'll earn my money, then I'll put a restaurant and I'll chill at my restaurant में बैठूंगा मैं आराम से. That was my thought process. अभी 30 पे खुलने का तो मेरा बिल्कुल भी नहीं था. But then it just so happened that I came back from Australia. I had some funds ready with me, and then I borrowed some, and then I invested into the business, and that's how I got into it. Okay. And then from there I thought कि यार हाँ सही है, अच्छा ही है. And I saw that the money is there. There is, I mean, it's a very different flow होना चालू हुआ. तो अच्छा लगा. Then opportunity struck within few months. तो I never thought of it. Second restaurant का फिर आया plan within like 8 months or something. Okay. तब मैं I was like करना तो है. दिख रहा है भाई तुमको क्या मिल रहा है, करना तो है, बट कैसे करूँगा. फंड्स भी तो एक इशू था. Then somehow I managed the funds किधर से. I pulled in this that however I could do it, and I opened up a second restaurant. And when I was talking to my friend, I was like,
He also happens to be my partner. Okay. But मैं उसको बोलते यार अपन ने क्या सोचा था 4 साल के बाद 5 साल के बाद खोले कि क्या 8 महीने में क्या कर बैठे अपन आर वी इवन रेडी फॉर दिस आई वाज लाइक सही है ना मतलब यू क्वेश्चन योर भाई हम लोग 4-5 साल के बाद अभी खोल रहे मतलब सही कर रहे हैं ना भाई तो जाऊ दे लोखंडे मेरे काय होईल I'm like ठीक है बघू आता काय होईल ते but then it was a very tough ride definitely very very tough ride challenging days आता है बट ठीक है यार आई मीन 2 रेस्टोरेंट है आई डोंट नो अरे वो बाहर से दिखने से सब चीज है ना the grass is always green on their side 2 रेस्टोरेंट्स के 2 अलग टेंशन भी तो सर पे है हाँ ट्रू ये वापस वी आर कमिंग टू द लूप और एक fortunately touchwood Escada day 1 से it's been in profit okay it's not seen a day of loss okay ठीक है एक भी दिन that's a very very commendable thing in the whole industry can I tell you something what I feel is कि Escada is always in profit because you faced the bad part या you know the mismanagement that जो experience लेना था वो वाला हाँ वो तुमने शायद पीछे लिया and that is why now you're की boss अभी तो ऐसे I know कि यहाँ पे इतना भी मतलब 30 मान नहीं बोल सकता कि भाई मैं 8 महीने में सीख लिया 10 महीने में सीख लिया I'm just telling but yeah I would give that to the team मतलब the team was really good हाँ exactly I mean I'm not saying we knew the market study as well क्योंकि तो एरिया माहिती है कैसा आपका we know that area that area is a hit Phoenix के पीछे भाई you know everything वो कल्याणी नगर वगैरह विमान नगर साइड जो है yes वो पूरा क्राउड I mean I stay over there right तो वो विमान नगर का जो भी पूरा क्राउड है भाई ऐसे बॉयसेस है there is a lot of young crowd खराड़ी का क्राउड होता है इवन का क्राउड होता है आईटी पार्क्स अराउंड हमको पता था कि भाई दिस इज अ गुड प्लेस एंड पीपल हैव डीपर पॉकेट्स ओवर देयर सो दे कैन अफोर्ड दैट काइंड ऑफ अ प्लेस तो दैट्स व्हाई वीव मैनेज्ड टू शेक द बिगेस्ट प्लेयर ओवर देयर एंड ड्रॉप देयर सेल्स एंड लेट्स नॉट नेम हाँ मतलब okay there is a player over there मतलब अभी the competition है ऐसा बोल सकते हैं yes तो we happen to do that as well which is good commendable बोल सकता हूँ not seeing because restaurant business लोग बोलते हैं भाई 1-1.5 साल रुको पर हमको रुकना नहीं पड़ा नसीब से touchwood हमको we didn't have to wait or we didn't have to put in for those losses so that was something which was good तो दूसरे रेस्टोरेंट में अगर थोड़ा लॉस होता है किसी में तो it was being covered up as well from this one and then there have been days like मैं तेरे को बोल ही रहा था भाई मैंने मेरा पूरा सैलरी भी अंदर डाल दिया there have literally been months when मैंने सैलरी कमा के पूरा सैलरी बिजनेस में डाल दे रहा हूँ सब स्वाहा करके सब खत्म don't you think कि that is something is good और फिर बाहर से लोग बोलते हैं भाई 2 रेस्टोरेंट नहीं but then it on a serious note मेरे को पता है कि I have seen bad days on a serious note I was going to say that कि it is a good thing कि you don't want your employees who are dependent on you to go empty handed and you're giving your own salary to them that is a good thing I don't know कितने लोग करते हैं but to have that idea कि somebody is dependent on me and I think that his family is responsible because of my decisions so you're taking that in consideration see Pushkkar we've come from a very we've not always been at the privileged we've come from a very you can say mediocre exactly middle class से भी well to do kind of a thing not middle class से भी नीचे ऐसे हम लोग ऊपर है we know the value of money we know what it means to put in your hard works ठीक है तो और त्यांच्या पोटावर लात मारून या उनको कुछ करके भाई अपने कुछ हासिल and exactly basically अगर वो है तो हम है ना exactly अगर कल वो छोड़ के जाता है तो हम लोग को और नुकसान भी तो है I can look at it in that way from a morality perspective also मैं उसको देख सकता हूँ तो I mean I am not the face of my business those people are very true मैं सिर्फ ऊपर बैठ के भाई हम these are the people who are doing it for me so it's my job or it's our job rather to look after them definitely exactly ठीक है even if I'm giving off my salary I can still manage my whole month but those guys cannot that is what I'm saying कि किसी के घर पे तो वही सिंगल सोर्स ऑफ इनकम होगा exactly तो ये एम्पैथी रहना we have there have come times when we've delayed the payment 10 दिन 5 दिन से delay हो गया हमारे साइड से obviously because we could not pull in the funds but then we've never ever किसी का सैलरी डुबाया किसी का सैलरी
द मैक्सिमम आई थिंक 8-10 दिन के ऊपर किसी को रुका के नहीं रखा है. भाई दैट इज आई मीन सच अ गुड थिंग दैट यू आर स्पीकिंग दिस आउट. बहुत सारे लोग बोलते भी नहीं ये सारी चीजें. हाँ, but I mean, नहीं, it is something what a good leader should do. I think that's what I was going to say. ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, but नहीं I भाई hope that the world goes towards that direction where you really think about others. There is empathy, और तुम समझो लोगों को. Because we hear so many layoffs, so many things in today's world, and on the contrary, I see someone जो भाई बोल रहा है कि मेरा I'm doing a double shift आपका पेमेंट होने के लिए. And I don't think होटल में salaries कम है. I mean, there's a staff like 50 लोग तो हो गए कम से कम. होते ज़्यादा होते हैं. If I assume bare minimum जो मेरे दिमाग में है, I don't know your business, I'm just telling. तो 40 लोगों को सैलरी रखना जब कुछ नहीं चल रहा है या जब आप लॉस में हो तो इट्स अ बिग कमेंडेबल टास्क यार. हाँ, मतलब दैट्स द राइट थिंग टू डू पुष्कर. मतलब कमेंडेबल पता नहीं, बट वही सही चीज है करना. ट्रू. I also feel कि from like what I have understood today na is that do you think there is a need for having a lot of cash ready? Like liquid, I don't know, but there has to be a ready source of income जो आपको रखना ही है. हाँ, रखना पड़ता है. तो I mean वो हर एक धंधे में होता है. सिंकिंग फंड होता है भाई तेरा. Here it is more important. हैंडी. हाँ, कि रहना ही चाहिए कि कभी क्या हो जाए you don't know. That's why. That this is the fact of this nation. There is trouble from cops. There are trouble from other agencies, sources. See, rules can change. For that also. I understand. You have to pay penalties. You have to pay fines. Which are unnecessary at times. Which are really unnecessary. But just people just. And कभी-कभी expenses होते हैं. कुछ चीजें फूटते हैं. जैसे हमारा डिस्कोटेक पूरा ग्लास का है. हाँ. ग्लास टूट गया तो भाई. हाँ. उसको उसी दिन तभी रिपेयर करना. Yes. So we need the money. Because the loss by people not coming on that discotheque is more high than that glass repair. Yeah. True. Fine. So shall we SWOT करना है या नहीं करना है? Actually SWOT करना था, but I think इसमें SWOT. हाँ, exactly. That's what I feel कि इतना हो गया कि SWOT ही हो गया. Strength ये है कि भाई business बहुत सही दिखता है मेरे को लगता है. It's a good source of income if you're doing things right. तू you tell your SWOT. मैं opportunity बात नहीं की तो मैं opportunity की थोड़ी सी बात करूँगा. For me the opportunity was post COVID. Okay. COVID में सब restaurants बंद हुए थे. And I not saying it in a bad way, but हमारे लिए it turned out to be advantageous because थोड़ा competition wipe off हो गया था. Okay. It is really sad that some people really had to lose their business, but restaurants काफी बंद हो गए थे. And when that was the time I think people really remember very well and will remember where people were locked into their houses and people really wanted to go out. So that लोगों ने switch करके पगार तो बढ़ा लेता अपना. Yes. अब आया है पैसा को बाहर भी जाना है. People wanted to spend. खुजली थी वो बोलते ना. And so I think that was a good time to get into some water. Yeah. पानी है. This is normal water. Yeah. तो वो टाइम था तो वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी. See, opportunity is catering the right crowd at the right time and then studying your market. अगर ये चीज जैसे अपने एरिया में भाई अच्छा कुछ कैफे नहीं है, अपन परसों बात कर रहे थे. Yeah. So that is one opportunity that this area has. Yeah. Seriously नहीं, अपन बैठने के लिए. True. पहले तो अपन किधर भी बैठते थे, but now if today you really want to have sit down, if you want to get a client of yours, if नहीं है जगह. I have felt this. There's a huge gap in the market which has been left after CCD has closed in our areas. Yep. बोल सकते. I cannot find a single cafe in PCMC or Pune. Pune तो चल ठीक. पुणे में there might be. But PCMC में तो I don't find where I can have a. Pimpri Road backwards, towards Nigri. Yeah. Not towards Pimpri Sodagar. Pimpri Sodagar still has. I am saying count it from not in Pimpri Sodagar. Pimpri Sodagar फिर भी ठीक है, पुणे का ही पार्ट पकड़ लो. After Pimpri Sodagar, let's assume सांगवी से लेके come to भक्ति शक्ति, लोनावला नहीं बोल सकता हूँ, तलेगांव. इतने रीजन में I don't find any single cafe जहाँ पे मैं किसी के साथ बैठ के over a cup of coffee have a simple business meeting.
तो वो है ही नहीं. दैट इज अ स्पेस दैट इज तरी तळेगाव बोलतो है, बट तळेगाव is not very densely populated. आपका Yeah. high density areas, पिंपरी चिंचवड, निमली, Yeah. क्या high Yeah. density Yeah. area, but not a single cafe true or not a single place where you know you can be like, "Hi, this can be my regular Yes. hangout place. I can get somebody over here." yes ऐसे yes जगह ही नहीं है. and जो अपने लिए नहीं है. The people who are in obviously. 20 post late 20s 25 and- above से हाँ, लेके बोल सकता है तू. because कॉलेज के बंदे क्या है, वो तो कहीं पर भी they can chill out, but we cannot chill out. I know, मतलब I सही में cannot नहीं है. have a business meeting जहाँ पे पीछे शोर चल रहा है शराब. CCD में वो एक रहता था. There used to be a good vibe about समझ it. रहा हूँ मैं तू क्या बोलना चाहता हाँ, है. नहीं. CCD में नो. नहीं, I'm just saying. I mean, see, चल CCD छोड़ दे. I don't find a Starbucks also here. हाँ, अभी एक खुला है. But हाँ. that's still in a mall, so that's हाँ. senseless. हाँ, so that's what I was saying कि outside में there's nothing like that. Yeah. तो भाई साहब आपका opportunity वो है. You can think about it. 8 महीने में 2 खोला है. But हाँ, ऐसे चल. रफ्तार में नहीं जाना है जिंदगी. नहीं. Coming back, what strengths I find is the strength that your business has, your specific business, आपका, is that there's a great vibe about everything. I'll tell you, is our food. Yeah, that is what and I our was drinks. coming. Yes. I have not spoken about it, but हम लोग इस पे बहुत मेहनत भी लिया. फूड का जैसे मैंने तेरे बोला, we got in. Actually, I was coming to that. हाँ, टैलेंट पोचिंग किया हमने इसके लिए. Okay. HR टर्म्स में जो बोलते हैं. हाँ. किसी और का गन को निकाल के अपना गन बना दो. Okay. I get That's what we did. Yeah. And then we made him to do a lot of things. So we took a guy from a really good restaurant. And then we put him on our place. Yeah, हाँ. Made him run. We do have a team. We have our corporate chef जो सब कुछ देखता है. वो looks after all these people. And the event and everything. तो हमारा strength मैं बोलूँगा food है and the drinks. So for drinks as well, we have signature drinks. Why? What is the costliest? Out of curiosity, I don't understand. But फिर भी, what is the costliest या finest alcohol that is served at your place? I don't know if it is the finest. I don't know. मतलब you can tell कि ये जो ड्रिंक है भाई, अगर ये आप कहीं पर भी आते हो, ये बहुत एक्सपेंसिव रहेगी या तो ये बहुत एलिट रहेगी जो probably यहाँ पर नहीं मिलती होगी. या कॉकटेल्स की बात कर रहे हैं या स्कॉच वगैरह की बात कर रहे हैं? I don't know. कॉकटेल्स are damn good, bro. मतलब मुझे पसंद है. We put So in which edible flowers and is everything. your personal favorite dish as in alcohol and food also? Yes. Like this can be our last question probably. Let's. जो मेरा ड्रिंक है वो तो मेरा बारटेंडर मेरे लिए बनाता है. And that is? It's his own drink basically. Okay. जो मेरे लिए बनाता है. Okay. But apart from that, what we serve, we got really good signature drinks जिसमें मेरे को कोरल करके एक वो भी पसंद है. Coral. So what is that? Is that a like whiskey based? No, it's a cocktail. Okay. By gin cocktails are in right now. Okay. अगर तू जाएगा किधर दिखेगा. तो I think gin cocktails are really in and it tastes really good. It's a balanced one. बहुत अच्छा है. You can see it's a purple color drink with edible flowers in it. It tastes plumbing amazing. मेरे को सही लगता है. And मैं खुद का रेस्टोरेंट हाइप नहीं करना चाहता हूँ, but I really like the drinks. सब balanced है. ऐसा नहीं कि something's overpowering. लोग ये भी कहते हैं कि भाई तुम्हारा LIT इसको क्या हो गया? हमारा LIT बहुत अच्छा है करके. I don't know. तो मेरे को पता नहीं भाई, वो मतलब I'm not a big fan of that drink only, but apparently it is good served in fancy glasses and everything. Okay. We've taken care of our glassware as well. तो हम लोग जिसमें सर्व करें ऐसा should look beautiful, presentable, Instagrammable. These are all our strengths, I feel. And what is your favorite dish? खाने में बोल भाई. मैं मतलब I want कि मेरा जो ऑडियंस ये सब ड्रिंक नहीं लेता है उसको खाने के लिए भी तो आना चाहिए आपके पास. तो क्या मतलब व्हाट इज योर फेवरेट? और ये मत बोलना कि इन्वेंटरी जो ज्यादा है तो आप प्रॉन्स कर रहे हो. ऐसे नहीं. इन जनरल व्हाट इज चॉइस होता है ना. आई एम जस्ट लाइक ऑल ऐसा तो हमारा इन्वेंटरी का में तू प्रॉन्स खा के जाएगा ऐसे नहीं होता. हम लोग उसको एक अपसेलिंग बोलते हैं. या अब जैसे मेरे को तो एलर्जी है प्रॉन्स का, मैं नहीं खाता हूँ, तो मेरे को बोलेगा तो मैं खाऊंगा नहीं. यस बट व्हाट इज योर लाइक एक डिश जो which is your personal favorite या probably काकुंची favorite असेल की यार अक्षय असं काहीतरी असेलच ना यार. मेरे को 2-4 चीजें पसंद है. मेरे को खाउसॉय पसंद है. क्या पसंद है? खाउसॉय करके वो पसंद है. मेरे को हमस एंड पीटा ब्रेड हमारा पसंद आता है. ओके. देन आई इवन लाइक एन इंडियन फूड.
ओके सही में पसंद भाई खाऊ साउंड आई डोंट नो मेरी ऑडियंस स्मार्ट रहेगी मुझे नहीं पता नहीं नहीं है ऐसे तो आई लाइक अ फ्यू ऑफ देम हाँ। आई रियली लाइक अ फ्यू ऑफ देम और मैं इतना पिकी नहीं हुआ कि मतलब ओके मैं एक ही खाऊंगा हाँ। बिरयानी भी अच्छी थी अच्छा थ्री मस्कीटर्स की बिरयानी भी अच्छी है ओके there's a few things that I do. And कैसा होता है when I go in there so पुष्कर तर वेगळंच असतं म्हणजे आता मैं जाके ऐसे नहीं बोलता मेन्यू में से ये ऑर्डर करो that I do when I have to check ओके when I'm going there on a regular basis मैं बोलता भाई कुछ तो खाने को बना के लेके तो that's when you do your quality check also and ऐसा कुछ नहीं मैंने भिंडी फ्राई भी खाया भाई जब मेरा मन नहीं था मैंने बोला भिंडी फ्राई रोटी बना के दे दे बस ओके you cannot have hotel food every day यार मतलब ट्रू ऐसा भी होता है ना तेरा वो तो लोगों का चेंज है ना तेरे लिए तो हर रोज का हो जाएगा एक पॉइंट भी एक नौसिया भी आता होगा कि यार वही हर रोज नहीं रे अपन साधी माणसं आहेत ट्रू Yes, आई थिंक चालेल. भाई एकदा मैंने फक्त एक बार भी कैमरा में देखा नहीं नहीं, also नहीं, एक कोई रोज नहीं. सो गाइस अक्षय लोखंडे इनका रेस्टोरेंट है देर आर टू ऑप्शंस भाई इफ यू वुड लाइक टू जस्ट एड्रेस इट टू द पीपल कहाँ पर है क्या है एंड वेयर दे कैन मीट यू yes they you can meet me लाइक हिज इंस्टाग्राम yeah Instagram is there तो Yeah. वो ही है my Instagram handle is akshay.lokhande if Yeah. at all anybody wants to get Yes. in touch if you want to visit the restaurants if there are bookings or if there is anything you want to do you can either contact me या फिर आप Instagram पे ही जाओ मैं बोलूंगा we've got our pages we've got our managers numbers over there तो आप वो भी देख सकते हो the name of the restaurants are Escada All Day Diner you can Instagram it, the name Yeah. I think it's a pretty easy account to find because it's one of a kind name the links of all his social handles the pins of his Google locations will all be given in the description do not worry वो सब I will look after that तब तक ऑडियंस को बस बोल दो ना लाइक शेयर सब्सक्राइब yes do like share and subscribe to his channel प्लीज भाई बिकॉज वी आर ट्राइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स 10 से 15 एपिसोड का एक सीजन होने वाला है नेक्स्ट क्या सीजन कुछ और रहेगा सो दैट्स द एंड ऑफ इट थैंक यू